Namaste ji, namaste. So recently I saw a post on Twitter which read as, I'll put it on the screen, there are thousands of PhDs who make very little money but are experts on their subject. Then there are average Joes making, well, thousands of pounds reselling products on Amazon. Insane times we're living in. So now the author is presuming, जैसे हम critical reasoning में बात करते हैं, that education will give you, well, it will give you more money or more income. Well, guess what? The reality is entirely different. Education does not entitle you to more income, especially in a business environment. It just does not. So, for example, presume कर लीजिएगा. अच्छा चलिए, I basically posted on Instagram as well. I'll just basically elucidate my point that education does not entitle you to an income, and especially an income over those who have less education than you. Being more educated means you know more, doesn't mean that you necessarily earn more, get over it and get on with it. That's the reality of life. तो आप presume कर लीजिए कि मान लेते हैं, let us say that there is a person who is dealing in the commodity market में dry fruits वगैरह का काम करता है. तो वहाँ पे अगर वो 10th पास भी है, 11th पास भी है and he knows the in and out of the market, चलता है वहाँ पे. But obviously he will never be placed in Bain, McKinsey, etc. etc. जो आपकी जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं या बेसिकली लॉ में वो कुछ नहीं कर पाएंगे. तो अलग अलग आपकी जो डिग्रीज हैं दे आर ओनली वैलिड इन देयर स्पेसिफिक डोमेन्स. अब लॉ की डिग्री लेके अगर आप मान लेते एक हार्डवेयर स्टोर या एक लैपटॉप की दुकान खोलेंगे तो उस लॉ की डिग्री का वहाँ पे जस्ट बिकॉज यू हैव अ डिग्री इन लॉ डजंट विल जस्ट नॉट अर्न यू मोर मनी, राइट. तो बिजनेस के अंदर एजुकेशन से हमेशा ये याद रखिएगा कि एजुकेशन इज अ वे ऑफ नोइंग मोर थिंग्स, बिकमिंग अ सब्जेक्ट लेवल एक्सपर्ट इन योर डोमेन. और उस चीज़ का अगर आपको पैसा लेना होगा तो आप उसी इंडस्ट्री में जाके ले सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल MBA रनिंग अ किराने की दुकान will just not more earn more money because of the, or rather for the virtue, due to the virtue of him being a MBA or her earning this degree. Just because उस MBA आपके पास doesn't mean कि किराने की दुकान आपकी ज़्यादा चलेगी, राइट. तो ये बात आपको समझ लेनी है कि जी पढ़ाई से नेसेसरली ज़्यादा पैसे कमाने का हक आपको नहीं मिलता. Education, definitely, if you're coming from a very humble background, if you're coming from, let us say, acute poverty, education is the only way to break this generational curse and clear a government exam and just get placed somewhere so that you can get your parents out of that financial mess as well. So basically, you're just upgrading. So for those folks, there is just no way out beyond education, except maybe that they become super successful in business, which again they can do without education. But education always helps, but isn't a necessarily sine qua non. That is the most essential factor in determining how much will you earn in life. It just isn't that. I know folks who are barely 10th pass and earn 10 times as me while doing business, of course. And I have like what 3-4 degrees now. That doesn't mean that you will end up earning more money, because education का point ही दूसरा है. तो जैसे मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर करी हुई है, सो राइट नाउ इवन टुडे व्हेन आई एम नॉट अप्लाइंग दैट नॉलेज इज लॉन्ग गॉन. अब आज मेरे को माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई ड्रिल करेगा तो बेसिक फंडे तो मैं बता पाऊंगा लेकिन पूरे नहीं. बट अगर लॉ में करेंगे तो ऑब्वियसली मैं सारे जवाब दे दूंगा academically, not practically. So education has to be, you have to keep in mind that education works only in the domain in which you apply it in. समझ रहे हैं बात. और एजुकेशन जस्ट बिकॉज आप पढ़े लिखे हैं डजंट मीन कि आपको ज़्यादा पैसा, भाई कोई MBA करिए आपने, LLB LLM करिए तो कोई आरती की थाल लेके दुनिया में बैठा है, सब कुछ नहीं होगा. एंड स्पेशली इन द डोमेन ऑफ बिजनेस, ऑलराइट, इन द डोमेन ऑफ बिजनेस education is absolutely, it certainly helps you if you have the education, because आप में पॉलिश आ जाती है, थोड़ी बोलने की स्किल आ जाती है, थोड़ा आपकी दिमाग सोचने की कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाती है. But then you will find 10 trillion people who are making a very decent living in the domain of business without ever being as formally educated as others. So just because you have a PhD doesn't really mean that you'll be earning more. इस किताब में लिखा था, अगर किसी ने कहीं लिखा है और किसी ने आपको ये बताया है तो वेल गलत बताया है. It's as simple as that. तो ये बात आप याद रखिए कि आप एजुकेशन कर किस लिए रहे हैं. एजुकेशन फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, फॉर योर ओन पर्सनल सेटिस्फैक्शन, और यू जस्ट वांट टू अर्न मनी फ्रॉम द एजुकेशन.
well, then you take your degrees and well, you apply that knowledge that you have earned thanks to that degree, because practically speaking, you're paying for that degree also, so it's an asset for you. And then you apply it to earn back by selling your time, क्योंकि और तो आप कुछ बेच ही नहीं सकते ना, अपना समय और ज्ञान ही तो बेचेंगे डिग्री के बाद। ज्ञान जो आपने जो कमाया है डिग्री के द्वारा, तो आप ज्ञान सामने वाले को अपना बेचेंगे और वो आपको उस आपके समय और आपका जो नॉलेज है उसकी मिक्सचर के पैसे देगा। जितनी ज़्यादा आपकी नॉलेज और जितना ज़्यादा आप पुराने उस फील्ड में हैं, उस हिसाब से आपका रेट बढ़ते चले जाएगा। समझ रहे हैं ये बात? तो बिज़नेस में लेकिन ऐसा नहीं है। बिज़नेस में अगर आपके पास 1-2 करोड़ रुपए है और आप मान लेते हैं एक सोनी के कैमरा की डीलरशिप आपने ले ली, तो आप अच्छा बिज़नेस कर पाएँगे, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। उसमें अगर आपके पास एमबीए हो, एलएलबी हो, एलएलएम हो, पीएचडी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? सामने वाला कहेगा भैया कैमरा दे और मैं अपने घर जाऊँ। ठीक है जी? सो होपफुली दिस इज़ नाउ क्लियर टू यू। ऑलराइट, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय।